Thank you, madam. Now I'm going to be present on infection prevention and control standard-based precaution. Myself, Ms. Renulata Das, registered nurse, nurse educator, IMSN, Sama Hospital, Bhubaneswar. So, introduction is regarding COVID-19 as it's a pandemic disease and it is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, which is spread predominantly by respiratory route. Through respiratory route, it is transmitted by respiratory droplet and direct contact with fomites. Fomites is a disease infection carrying agents like any kind of handkerchiefs, clothes, anything. So in transmission standard based precaution for all patient care areas, there are 8 criteria. First one is the hand hygiene, then use of personal protective equipments, respiratory hygiene and cough etiquettes, then safe injection practices, cleaning and disinfection of devices and environment, waste management, then safe handling and cleaning of soil linen, then safe handling of dead bodies. First of all, we are going to be present on hand washing as a disease is carrying by the through hands. So we give more emphasis on hand washing practices. So do hand washing for 1 minute followed by 7 steps when hands are visibly soiled. If hands are not visibly soiled, then an alcohol based hand rub is preferable. So rub hands for 20 to 30 seconds followed by the same 7 steps of hand washing procedures. 5 golden moments of hand hygiene. There are 2 before and 3 after golden moments of hand hygiene. So first one is the before touching a patient. Whenever we are going to touch the patient for any reason, do the hand hygiene. Then before clean or aseptic procedure, like if we are going to be IV cannulation procedure, any kind of catheterization procedures, anything. So we have to do a hand hygiene practices. Then third one is the after blood and body fluid exposure risk. After any contamination with body fluid, as example emptying the urine bank or any kind of dressing change, so do the hand hygiene practices. Then after touching a patient, and fifth one is the after touching patient surrounding. Besides of this, hands should be clean before and after eating and after using the restroom. So use of personal protective equipments in designated COVID-19 areas. These are the personal protective equipments we are using. So this first one is the coverall suit, then N95 mask. This one is the face shield, then goggles, then gloves, then shoe cover. So third one is the respiratory hygiene or cough etiquettes. So cover your mouth or nose with a tissue when you are cough and sneeze. Then put your used tissue in the designated leg operated bin. So if you don't have a tissue, then cough or sneeze into your upper sleeve or elbow, not in your hands. So wash your hands with a soap and running water. Dry your hands thoroughly with a disposable paper towel or hand dryer. Safe injection practice. First of all, जितेबाला भी आमे कौन से इंजेक्शन दबा को जाऊे पेशेंट को से वर्क स्पेस क्लीन हवा दरकार अननेसेसरली डबल स्टाफ से रहा कथा ना जी स्टाफ आम दरकार कि एरिया आमर जिनस दरकार से ट्रे आम रेडी करके पेशेंट साइड को नवा कथा तापर आमर हैंड हाइजीन जमीक आम कहुई अलरेडी कि बिफोर एंड आफ्टर आमको हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करार अच्छे जिते आम पेशेंट साइड को जाऊे देन थर्ड वन इज द स्टेराइल सेफ्टी इंजीनियर्ड सिरिंज आमे डेजिग्नेटेड गोटे मेडिकेशन पाई सिंगल यूज सिरिंज आमे यूज करया कथा अननेसेसरीली आमको आफ्टर सिरिंज यूज केबे भी रिकैप करया कथा नुह जदि हमर रिकैप निहाती दरकार ताले आमे स्कूपिंग मेथड यूज करबा देन जितेबाला भी आम कौन से मेडिकेशन को लोड दबा को जाऊे कि कौन सी लाइन लगे को जाऊे से ऑलरेडी कॉटन को आम सोप करके अल्कोहल स्वाब रे केबे भी नहीं कि जीवा कथा ना अदरवाइज से स्वाब कंटामिनेटेड हे जीवो देन आमर स्टेराइल मेडिकेशन एंड डाइल्यूटेंट जितेबाला भी आम मेडिकेशन होची दबा को जाऊे मेडिकेशन रेडी कर सारा माने केमिकल प्रोडक्ट्स को डाइल्यूट कर सारा आमको अगेन जितेबाला आम लोड करिया को जाऊे सिरिंज से वाइल रो डायफ्राम भी अल्कोहल स्वाब रे क्लीन हवा दरकार देन स्किन क्लीनिंग एंड एंटीसेप्सिस जमती कि आम कौन से भी स्किन रे कौन से भी पंक्चर करिया को जाऊे आमको स्किन प्रेप स्किन प्रिपरेशन करिया को थाए तो स्किन प्रिपरेशन आम सेंटर टू पेरिफेरी करबा सर्कुलर मैनर रे आउ
अल्कोहल स्वाब रे ही करिया कथा देन एप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ साफ्स जते बेले भी हमें साफ संगे डील करूचे सेते बेले कोन से भी अदर वे संगे ताको मिक्स अप करियार नाही जते बेले भी जे भी क्रिएट करचंती से साफ को सेही पॉइंट ऑफ जनरेशन रे ही सेटा को डिस्कार्ड करिया कथा अदरवाइज जदी हमें पास करिबा कोन से साफ जिंस को तेरे भी चांसेस अछि नीडल स्टिक इंजरी हबार सो दैट सेही पई को है कि जे भी जनरेट करचंती सेही ही डिस्कार्ड करिया कथा. Then seventh one is the appropriate waste management. Waste management practices रे हमें biomedical waste 2016 guideline को follow करछे सेही अनुसार हमें waste disposable करिबा. Cleaning guidelines. Seal of areas where suspect has been and wear PPE. जो एरिया रे हमर क्लीनिंग होची मींस डेजिग्नेटेड कोविड-19 एरियाज रे जतरा हमर क्लीनिंग होची से एरिया को हमें सील करूछु तापरे होची जे भी क्लीनिंग स्टाफ्स अछन हाउसकीपिंग रे से माने डेजिग्नेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रे ही क्लीनिंग करूछंती. देन वाइप डाउन ऑल एक्सेसिबल सर्फेसेस विथ डिसइंफेक्टेंट. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन रे सोडियम हाइपोक्लोराइड रे डिस्कशन अछि. सो फर्स्ट होची सर्फेसेस डिटर्जेंट सॉल्यूशन रे क्लीन हे साला परे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रे अगेन डिसइंफेक्ट करा होची. कांटेक्ट टाइम 10 मिनट और 20 मिनट. जदी 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रे क्लीनिंग होची देन कांटेक्ट टाइम इज 10 मिनट. जदी 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रे क्लीनिंग होची ताहले होची कांटेक्ट टाइम is 20 minutes. Then discard the cleaning items of cloth and absorbent areas into biohazard bags. जहाँ भी cleaning बेले हमारा waste generate होची immediately सेटा biomedical waste guideline अनुसार 2016 guideline अनुसार सेटा discard करा होची. Then disinfect bucket by soaking in disinfectant solution. जो bucket रे भी cleaning होची से bucket को again hypochlorite solution में dip करा है कि सेटा अगेन डिसइंफेक्ट है कि हमें नेक्स्ट यूज पे रेडी करके रखुछु. Then cleaning and disinfection of devices and environment. Cleaning reagents amara mostly hypochlorite solution and isopropyl alcohol रो यूज करा होची. किंतु कोठी हमें hypochlorite solution यूज करिबा कोठी हमें 70% isopropyl alcohol यूज करिबा. जो इंस्ट्रूमेंट किबा डिवाइसेस रे ब्लीच सॉल्यूशन एप्लीकेबल न थाए सही प्लेस रे किबा सही डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट रे हमें अल्कोहल isopropyl alcohol रो यूज करूचे. किंबा जो डिवाइसेस जमती की कॉस्टली डिवाइसेस अच्छी बट तार क्लीनिंग गाइडलाइंस आम पाखे अवेलेबल नहीं ताहेले भी हमें तार आउटर सरफेस को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रे डिसइंफेक्ट करूछु. मोस्टली क्लीनिंग ऑफ डिवाइसेस रे जेमती कि हमर हॉस्पिटल सेटिंग्स रे पेशेंट पाखे रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स यूज होची जेमती कि स्टेथोस्कोप हैला थर्मोमीटर बीपी एपेरेटस पल्स ऑक्सीमीटर. तो एई सब जिंसो को हमें अल्कोहल स्वाब रे एटलीस्ट वंस जदी यूज रे नाही ताहले हमें एटलीस्ट वंस अ डे करूछु. जदी देन जदी यूज रे अछि ताहले आफ्टर ईच पेशेंट यूज हमें ताको डिसइंफेक्ट करूछु अल्कोहल स्वाब रे. Frequency of cleaning of surfaces. High touch surfaces जोटा कि हमें बारंबार टच करछे जेमती कि डोर नॉब सेला बेडसाइड रेल सेला स्टेयर रेल सेला लाइट स्विचेस वॉल अराउंड दी टॉयलेट. तो ए सब एरिया रो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग केमती होबा दरकार जेमती कि जोटी कंफर्म्ड किंबा सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट अछंती से एरिया 1 to 2 आवली बेसिस रे क्लीन होबा दरकार. अदर एरियाज जोटी कि सस्पेक्टेड और कंफर्म कोविड-19 पेशेंट नाहाती से एरिया गोडे 2 to 3 आवली बेसिस रे क्लीन होबा दरकार. नॉन क्लिनिकल एरियाज रे 3 to 4 आवली बेसिस रे क्लीन होबा दरकार. Then frequency cleaning of surfaces in low touch surfaces. Low touch surfaces हैला जेमती कि walls हैला mirrors हैला floors हैला ceilings हैला जो जगह के हमर हाथ पहुंचेनी किंबा हमें बहुत कम ही से एरिया को टच करती. तो से एरिया रे क्लीनिंग केमती होबा दरकार जेमती कि जोटी सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड कोविड-19 पेशेंट अछंती से एरिया गोडे 2 to 3 आवली बेसिस रे क्लीन होबा दरकार. देन जोटी सस्पेक्टेड किंबा कंफर्म्ड कोविड पेशेंट नाहांती से एरिया गोडे 3 to 4 आवली बेसिस रे क्लीन होबा दरकार. Then non-clinical areas जेमती कि administrative block हैला से एरिया गोडा once per shift clean होबा दरकार. Then handling of biomedical waste. आमे जो biomedical waste रो रूल फॉलो करछो सेटा हैला 2016 गाइडलाइंस रे जेमती कि हमर 4 biomedical color coded beans आमे यूज करछे. फर्स्ट हैला येलो रेड ब्लू एंड पंचर प्रूफ कंटेनर.
Yellow ray designated blood and body fluid soil materials we are discarding in yellow color bin. Red color bin infected and non-infected rubber and plastic waste. Then in blue color bin all glassware items and metallic items, and in puncture-proof containers we are disposing only the sharp materials. COVID-19 areas रे same disposable criteria, but difference कोडी अछि ना आमी non COVID areas रे single disposable bag beans रे use करूचे, but in COVID areas रे आमी दीटा disposable bag सबो bin रे use करूचे. काहेंकि ना first of all ये गोटे provide करे adequate strength, आउ जदि any kind of जदि first bag रे leakage अछि ताले second bag ताको cover up करि परिबो. Then bean bag bean आउ trolley सबो COVID-19 mention करा हबो, जोथरे कि transporting trolley हो कि designated departmental जो bean हो जोटी कि COVID-19 patient अछंती. Then से beans कोडा आम non COVID areas रे केवल disinfection करा जाएनी, but in COVID-19 areas रे beans भी disinfect करा जिवो. Both bean जतरे disinfect करा जिवो outer surface भी clear disinfect करा हबो and interior surface भी disinfect करा हबो. Then safe handling and cleaning of soil linen. जो patient care areas जोटी COVID-19 patient अछंती तांकर screen, bedsheet, pillow cover, तांकर gown केमती clean करवा दरकार. एटा institutional guidelines ऊपर depend करूची. जेमती कि गोटे leak proof bag रे first soil linens को collect करा हबो, तापरे 60 to 90 degree centigrade detergent solution and hot water solution रे सेटा clean करा हबो. After that hypochlorite solution ने 30 minutes रे dip करा है कि तबे ड्राई करा है कि ready to next use हमें करंती. किंतु एटी hypochlorite solution जदि गोटे institute 1% hypochlorite solution use करचंती ताहले तार preparation केमती हबो. जदि hypochlorite solution 4% रो available अछि ताहले जदि 1% हम करार अछि सेतरे 100 ml hypochlorite solution and 300 ml of water add करा हबो जदि सेटा 4% hypochlorite solution अछि. Safe handling of dead body. There are three criteria for safe handling of dead body. First one is the before handling of dead bodies, then during handling of dead bodies, and after handling of dead bodies. Before handling of dead bodies, the staff nurses should completed the 3 doses of hepatitis B vaccine. Staff should wear complementary personal protective equipment, avoid direct contact of blood and body fluid exposure, and avoid any kind of sharp injury. During handling of dead body, the staff nurses should be more careful when they are removing any drains, catheters on the dead body. Then any puncture or holes or wounds that is created by removal of catheters or drains or tubes, that should be disinfected with 1% hypochlorite solution and dressed with impermeable material, means waterproof dressing should be provided. Apply caution while handling sharps such as intravenous catheters and other sharp devices. They should be disposed into a sharp container like puncture-proof containers. Then plug oral or nasal orifices of the dead body to prevent leakage of any kind of body fluids. If the family members of the patient wishes to view the bodies at the time of removal from the isolation room or area or any COVID hospitals, they may be allowed to do so with the application of standard precaution. Place the dead body in leak-proof plastic body bag. The exterior of the body bag can be decontaminated with 1% hypochlorite solution. The body bag can be wrapped with a mortuary sheet or sheet provided by the family members. Viewing of the dead body by unzipping the face end of the body bag by the staff using the standard precaution may be allowed. It will come under the after the dead body packing, means recommendation nurses after the dead body handling. So funeral parlor is also allowed if the patient attendant wants to do any rituals like reading of books or any sprinkling holy water and any other last rites that does not require touching of the body can be allowed. Bathing, kissing, hugging, etc. of the dead body should not be allowed. The funeral or burial staff and the family members should perform hand hygiene after cremation or burial. The ash does not pose any risk and can be collected to perform the last rites. Large gathering at the cremation or burial ground should be avoided as a social distancing measures, as it is possible that close family contacts may be symptomatic and or spreading the virus. So that this is the end of my session. If any kind of doubt arises in this session, please put your doubts in the chat box. Thank you.